सारी हमारी घर की औरतें बोलती थी रुकिए रुकिए, ये सास बहू रोकिए, हमारे अर्नब जी की आवाज आ गई है। दिल्ली से लेकर कन्याकुमारी तक जब इनकी आवाज बोलती थी हम जानना चाहते हैं, द नेशन वांट्स टू नो, हर किसी की आवाज रुक जाती थी क्योंकि वो उनसे डरने लग गए थे। सत्ता बदल जाती थी। सचिन तेंदुलकर बोलते थे अरे मेरे को 100 मारना पड़ेगा नहीं तो अर्नब पूछेंगे हमसे सवाल। अर्नब गोस्वामी बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए सर। गुड मॉर्निंग सर। और हमने जो सर बोला है बिल्कुल सही है, क्योंकि आपका फेयर फैक्टर सर मिलके तो ऐसा लगता नहीं है, लेकिन पहले क्या आपका वट था और वापस वो वट आने वाला है रिपब्लिक में। बिल्कुल। बट यू डू मिस दैट वट ऑफ योर्स सर? What is the translation of what? योर पावर। My power. No, I've just been away for 4 months. अब 3-4 हफ्तों में शुरू करेंगे हम रिपब्लिक टीवी। I can't wait to be back. I really can't wait to be back. I asked 6 people कि आपको अर्नब सर से क्या जानना है। सब लोग यही पूछ रहे कि where have you been? तो मैं उस लहजे से, उस जोश से पूछूंगी। Just tell us really behind the scenes क्या होता है? क्या होता है मीन्स ऑनर पूरा चैनल आप सेटअप नहीं, उससे पहले हम जानना चाहते हैं सो रहे हैं, क्या कर रहे हैं? लेट्स स्टिक टू दैट क्वेश्चन। वेयर हैव यू बीन? क्या कर रहे थे आप? छुट्टी पर गए थे? यस वी नो आपने रिपब्लिक की बातें की थी, लेकिन वो 4 महीने छुट्टी उट्टी ली आपने? नहीं, जिम विम किया? क्या किया? आपको लग रहा है जिम विम क्या? पतले हो गए सर? काम कर करके पतला हो गया। एक्चुअली मैंने दिसंबर से लेके दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 4 महीनों में ये है सलील अर्चना। आई टेल यू दिस इज द क्विकेस्ट टीवी न्यूज चैनल लॉन्च इन द कंट्री। मतलब 120 दिनों में जी, in 120 days we are setting up a full national news channel. जी, This has never been done before. आप कहीं पे भी across the world you tell someone that you're setting up a national news channel for a country like India with 1.2 billion people and you have 20 bureaus across the country. बट ये क्यों किया? Was this to show the world I'm back? No, not to show the world I'm back. मुझे लगा सलील कि मैं जिस तरह की जर्नलिज्म करता हूँ इसको फ्री होने की जरूरत है, इसको इंडिपेंडेंट होने की जरूरत है, इसको ट्रूली इंडिपेंडेंट होने की जरूरत है। मतलब सलील और अर्चना, मैं फ्रैंकली आपको कहना चाहता हूँ कि एक पॉइंट आता है हर आदमी के लाइफ में और करियर में जहां आपको लगता है कि मैं जो करना चाहता हूँ आई वांट टू डू इट एंड आई वांट टू डू इट माय वे, नॉट लाइक माय शो, नॉट माय वे और द हाईवे, बट यू एक्चुअली वांट टू डू इट योर वे, एज इन यू फील दैट जर्नलिज्म इज अ वेरी सेक्रेड बिजनेस। मतलब कि रिपोर्टिंग, आप क्या स्टोरी करना चाहते हैं, आप कैसे करना चाहते हैं, आप क्यों करना चाहते हैं, आप जो एक प्रिंसिपल होती है हमारी ऑफ नो कॉम्प्रोमाइज, कि हम गलत चीजों के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। आज आपको लगता है आज के टाइम में भी ये कर सकते हैं? आज मुझे लगता है कि रिपब्लिक टीवी के साथ जहां पे पहली बार जर्नलिस्ट और रिपोर्टर्स और प्रोड्यूसर्स आके मिलके उन्होंने अपना टीवी चैनल जब शुरू किया है, तो उस चैनल में जो प्रोफेशनलिज्म होगी, जो इंडिपेंडेंस होगी हमारी, it will be greater than we have ever had before. And truly I'm telling you, Salil and Archana, we are both very very excited about doing this. मैं अपने स्टूडियोज में जब जाता हूँ, अभी ड्राई रन हो रहे हैं वहां पे मैं बच्चों को देखता हूँ और यू नो आई सी देम 23-24 year olds, how excited they are, how strongly they feel about issues, and more importantly, Salil, Archana, let me tell you, I am a nationalist. I see how strongly they feel about the country. मुझे ये भी लगता है कि बहुत आइडियलिस्टिक है, वो देश को बदलना चाहते हैं। ये जोश है जो आपने कहा, व्हाट इज द वर्ड यू यूज? वट। ये वट के बारे में नहीं है, जोश के बारे में। But I remember in that one show that I done with you, आपने बोला था कि जब आप भी यंग थे, आपके अंदर वो जज्बा था कि मैं चेंज कर दूंगा, मैं कुछ कर दूंगा। I genuinely want to know, इतने डिबेट्स के बाद, इतनी डिस्कशंस के बाद, क्या आपको रियली लगता है कि क्योंकि कहीं ना कहीं सलील और मैं भी उसका हिस्सा है जर्नलिज्म का, बिल्कुल है, हमारी आवाज उठाने से फर्क पड़ता है? मुझे लगता है बिल्कुल फर्क पड़ता है। पहली बात तो मैं कहना चाहता हूँ, रेडियो बहुत पावरफुल मीडियम है। आपको खुश करने के लिए नहीं कहना चाहता, मगर मुझे पता है कि लोग जब रेडियो सुनते हैं तो अकेले में सुनते हैं, गाड़ी चला रहे होते हैं सुनते हैं, 100% उनकी फोकस और कंसंट्रेशन होती है आपके बातों में। और आप जिस तरह से इफ यू वांट टू यू कैन रेज सोशल कॉन्शियसनेस इज ग्रेट। और मैं कहना चाहता हूँ अर्चना, यू शुड यूज इट, यू शुड यूज इट। आप डरिए मत, आप सोशल इश्यूज पे बोलिए, इस देश को बदलने की जरूरत है। द सेकेंड पॉइंट यू सेड कि इतने सालों के बाद क्या बदल चुके हैं, मैं तो अपने अंदर जाके मैं अगर झांक के देखूं कि क्या मैं बदला हूं, मुझे लगता है जो जोश मेरे में थी जब मैंने जर्नलिज्म शुरू की थी 21 साल की उम्र में, आज भी है। 20 साल ज्यादा हो गया, मगर मुझे लगता है आज मुझ में उतना जोश है। और मुझे जोश क्यों होती है ये मैं बताना चाहता हूँ आपको, क्योंकि मैं देखता हूँ कि इम्पैक्ट है हम जो करते हैं। अब देखिए, हाजी अली दरगाह में औरतों को अंदर जाने की परमिशन नहीं थी जी, हमने इस पर मूवमेंट की, और हाजी अली में ही नहीं, हमने मूवमेंट सर हमने भी एक साथ की थी यहाँ पे रेडियो पर, आपको याद होगा? यस बिल्कुल हमने की थी। उस समय आपको ये भी याद होगा कि सिर्फ हाजी अली दरगाह नहीं, हमने सवाल पूछा था कि सबरीमलई में औरतों को क्यों ना अंदर नहीं जाने दिया जाता, और महाराष्ट्र में शनि शिंगणापुर मंदिर में क्यों नहीं जाने दिया जाता है।
जिस तरह से प्रेशर हमने डाली, तो हाजी अली दरगाह में मुंबई हाईकोर्ट ने आके इंटरवीन की थी उसमें, और मुंबई हाईकोर्ट ने कहा था कि औरतों और मर्दों को सेम ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए, राइट? आई मीन दैट वाज अ बिग विक्ट्री. सो आप जस्ट टू कंप्लीट माय पॉइंट, मुझे लगता है कि जोश तब आती है जब आप देखते हैं कि आपके काम के कारण जो लोग सोचते थे कि ये देश बदल नहीं सकता है, जब आप देखते हैं कि देश बदल रहा है, कोर्ट्स रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, लोगों में वो जज्बा है कि देश को बदले, तो मुझे लगता है अगर रिपब्लिक टीवी जैसी कोई न्यूज चैनल आके उसमें और थोड़ा इम्पेटस दे और थोड़ी स्ट्रेंथ या पावर दे, तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है. आई कांट बिलीव कि अर्चना मेरे साथ आज अर्नब गोस्वामी है. इसके लिए स्टूडियो में तालियां हो जाए. इतने सालों तक इनको टीवी पर देखा, लेकिन मैं इनसे पूछना चाहता हूं, ये इनका फेयरफुल जो अवतार टीवी पर था, मिलके तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है. बिल्कुल नहीं. और वो लाइन नेशन वांट्स टू नो, वी वांट टू नो, कहां से आया वो लाइन? क्योंकि उसको आई डोंट नो कॉपीराइट किया गया है नहीं किया गया है, बट इट इज सिनोनिमस विद दिस absolute legend in the studio who's so young and so vibrant. जी हाँ, हमारे साथ अर्नब गोस्वामी. Your questions we will take as well. 66969191. Call us. Radio City 91.1 पर. Let me take a selfie of both of you. Fantastic. Great. You're so spotted. Would you like to do a morning show? I swear you are so good. Oh no, we want to eat with you. आप ऐसे आ जाओ. Sally, come in. तो तुम ऐसे Jump करो. in, ना? No, let him be finished. No, we have some time obviously, so. I'll take a selfie while. Some, and then what I'll do is I'll. And you take another one of him taking us, Yes, and yes. I'll use that. Yeah. So on. Coming in? Oops. Oopsie. Thank you. Thank you. I'm gonna treat this up. Just a minute. Oh, this is going okay? Very brilliant. good. We're having quite a good amount of response from our, audience here on Facebook. What are they you- saying? you're What on are they Facebook. saying? Yes, Okay, I we are want on- to Archana, you do the Yes. Facebook. Yes. Yeah, Come here, come here. Is I want this to on tell. Facebook? Firstly, I want to Yeah, tell all of of you. course, Facebook, Twitter, everywhere. I've had the honor to do a show with this man, and he listens like really intently. वो आपको देख के ना ऐसे सुनते क्या बोल रहे हो, एक एक शब्द सुनते हैं. मुझे याद है, the world was trying to take a selfie with him, Sir, you can but take he this was off. busy listening Because to I'm me. editing right. So, Arnabji, I want to ask you, Ask me. what is This is thing going live about? on Facebook. Yes. Twitter also. What is the big quality of you to be such a fantastic orator? Is it the fact that you listen, read, or what else? I just get totally involved. I just lose myself when the debate happens, and I let my head up, frankly. और उस समय I listen to some people out there. You know, sometimes you have somebody across you who's not really challenging in the way that they're responding to your Oh, yeah, questions, which that's are very so boring. amazing. And sorry to use the word RG, but there are lots of instances like that in people. How do you handle those kind of chats? Well, suddenly I'll tell you one thing, Archana, I'm blessed that when people come on my debate, they all get sort of totally involved. And they start responding. charge them. Sometimes I've seen the same people on another TV channel, totally relaxed, almost going to sleep and putting everyone to sleep. But when they come on my show, I'll tell you, they roll their sleeves up and everybody's ready for a fight. And sometimes, let me tell you one more thing. I want to have a calm, quiet, relaxed debate, right? And the people on the other side come and they lunge at me from the first word go. So I'm forced to get into it. ये आपके स्कूल में आपकी आदत थी ना डिबेट करने की? मैं बहुत ही मतलब कि ये असम की बात I है? was नहीं असम की बात नहीं. My father was in the army. तो army में we used to get posted every 2 to 3 years. So I've studied in all over India. Pune, Jabalpur, Jodhpur, Delhi. My father was posted Himachal Pradesh, Hamirpur, all What's over. been your favorite state or city? The favorite place I've ever been to is Shillong. So I studied in St. Edmunds, Shillong for 2 to 3 years. I'm from Guwahati. Yeah. I love Shillong. So anyway, we used to get moved everywhere all around. I was a very quiet kind of guy. You may not believe it, but in class 7 I started debating. 7? And debating changed my life. बचपन में डिस्कशन होती थी घर पे? घर पे तो कुछ बोलता नहीं था मैं, मगर when I used to go out there और एक किताब होती थी, I don't know if you used it in class 8, 9, 10, we had a book called Panorama, which is a collection of poems. And so I used to recite the poems, I used to take part in recitation, declamation, debate competitions, and that sort of changed my life. And I think debating changed my life. I think everybody should take part in debating. Your family has been full of judges and has been with the law and order. Has that been an influence? Yeah, आप कभी कोर्ट रूम में जाके देखते थे? I wanted to be a lawyer. Oh! Yeah, I actually really wanted to be a lawyer.
My father wanted me to be a doctor for some reason, so I used to tell everybody that my son is going to be a doctor, and he decided that my son will be a क्यों आप लोगों को pediatrician. दवाई देते थे क्या था पता नहीं, I used to, every time I used to come to a drawing room and people used to say, "Beta, what do you want to be?" And I used to say, "I want to be a child specialist." आप तो लेकिन बड़ों को डील कर रहे हो, बच्चों को छोड़ो. How is the whole journey of your new television channel been? It's like giving birth to a child. It's beautiful. I really sometimes feel I don't know what's happening here right now. Every day I go to office and there are more people who have joined. Yeah. And you suddenly look around this vast studio, you have 200 people, 300 people working, creating the news. You have to pinch yourself to believe it's happening. But the most magical thing of this whole thing is, and I'm just sharing this with you personally, in the end of November, I left my last job and I went to one room. It was a room as big as this. Okay. And I kept all my dabbas on one side and I sat on the other and I said, oh my God, how am I going to do this? And there was me, there was my family, there was a few close colleagues, and we said, how are you going to launch a national TV channel? Yeah. You've taken on such a big responsibility. But whether it is the blessing of God or whatever, it's just become bigger and bigger and bigger. And now today, Archana, you ask anybody, ask any youth in this country, Republic TV is not a channel, it is a movement. And you know where I launched this channel? मेरे पास पैसे नहीं थे. I did not have money to put out a big ad or things. So you know what I did? I went to the Under 25 festival in Bangalore. Okay. And in the Under 25 festival in Bangalore, there were 10,000 people below the age of 25. And I just went there, I made a speech, and there were some people who did this beatboxing. Yeah. So they did the beatboxing. Then I came and I spoke. I launched the channel, and they did another round of beatboxing. That clip went viral. Everybody across India liked what I said. And that was the launch of our channel. We didn't spend any money. We just went and spoke from our heart. No, but you're a brand to reckon it's today. amazing. And it almost seems like you're running an institution of sorts to ensure that you make more aware and responsible citizens. That's what it is about. If I asked you in schools and colleges, हम लोग की civics class होती थी ना सबसे boring होती थी उसको तो हम लोग बिल्कुल तवज्जो नहीं देते थे. Does it start that young? Do you think? Well, I think the love for the country cannot be taught in a civics book. Your love for the country has to come from the heart. And you have to feel for what's going on in this country. But more than anything else, I believe that this country can truly become great. I want to see this country achieve the level of greatness that it deserves. And I want that for the next generation, my son's generation and the next generation after that, I want them to live in a country that is not just a global superpower, but which is recognized for its essential strength. और मुझे लगता है the things that are holding this country back are very small. You can deal with it. तो मैं जो अभी Republic TV और Republic TV में जो जर्नलिज्म करना चाहता हूँ, ये डे टू डे न्यूज के लिए नहीं है. डे टू डे न्यूज तो होती रहती है, but I want through Republic TV to create a movement to spread awareness in this country, bring the country together, spread the spirit of nationalism, make people of this country come together on a few key issues, which will help us build a better country. That's 5 to 6 or fantastic. You 7 have years a from vision here. We're That's going to all quickly that go back to our link. I'm going to catch you again. Okay, Sorry. thank you. That was so good. That was live on Awesome. Facebook. It's still live. Sir, nashta aa gaya. You want to eat? No. Why not? No, I'll bring it in. No, but they are all live. You want to have me live on TV? I'll just bring the coffee bhi hai aur Well, khana that's bhi the hai. side you should be able to see. You eat as well. Okay. You're a Bengali, you're an Assamese. How can you not eat, sir? Please bring. हमें खातिरदारी करते हैं. बहुत कम मेहमानों की करते हैं. नहीं करते. I like your studio. Yeah? How sweet. But I really think, I'm looking at the both of you, that what you only need for a morning show, right, are two very involved people and a good team around them. Yeah. I think you're a great team. Thank you, sir. Thank you very How much. sweet. That's a It's big fantastic. compliment. Huh? Yes, we've somehow managed to stick it together. And you've been together for 10 years, huh? I've actually known her for 15 years. Ever since he came from Delhi. So, Is that yeah. So, When you one of the walk first into a radio radio people that we met in a different radio station was her. And then we He's eventually, aware of that. and then we eventually came together in 2009. Wow, I find radio very fascinating. Now it is, sir. Earlier it wasn't. Now it is. I think you guys should be allowed to do news. I don't know if this is going live in the government. Yes, we do, Or we not, do. but I feel they should be allowed to do news. On Yes. this. Thank you. That's a big And not be sued for it. No, not be sure. Why should you? Because you can't censor anything in nowadays. Yes. You can't. Come on. You can do radio news on digital.
Yep. You can launch a radio channel on digital, so why not a radio channel on the airwaves? Correct. Yes. That's the question. The But we nation had Jayaji wants to know saying- why you don't have. Yes, please ask for us. Abe Thomas, our CEO, will have differing views. Sadly, it's honestly, sir. Off camera, I just did something at FICCI. We were talking about radio and how difficult the government has made it for India to actually be able to make radio over here. It is not a feasible and a viable medium at all. Yeah. And as a result of that, most of them end up going under Yeah. because of this. So on top of that, we antagonize the I'm situation. saying you do whatever else, but with a little bit of your music and all that, you should also do a little bit. But they should news open and all. talk radio. Like in London, it's there. In Pakistan also, we have talk radio. Between the songs, between the other things, between the conversations. Guys, will you have? I'm just having half a sandwich. So between all of that, you can do little bits of news. Because I felt so strongly yesterday about what happened with Kulbhushan Jadhav. Yeah. You know, and I know, now there's this whole argument, right? There's a whole argument about how the government should respond to Kulbhushan Jadhav. I want the whole link to And I feel it should be a public debate. that I've just put over there. This debate. You must be feeling so strongly about talking about it right now somewhere. 4 minutes 26 seconds. And you can't because here you're taking sides. Where No, I always take sides. When it comes to India, Pakistan, I take sides. I cannot be. Where I are cannot- we live right now? I cannot. Okay, then I can't tell you what we No, do. no, that's Are you? all Are right. you? No, do no, you think it's okay? we took It's sides. okay, you can live, is it? It's Yeah, okay, I but- don't care. but no, These no. are my views, I'm never going to censor them. Do you think So- T20 may not involving Pakistan is a good thing? See, I have, frankly, if you tell me that there are times when you need to... This is our page. I don't want to go into the Don't Pakistan. get into... Don't go into that, Archana. I don't want to go into this. This is your our page, right? I don't want to ask a question. But I'll tell you my views on this. Yeah. I feel the country should come together on these kind of issues. Yeah. We should... And discuss. And I have a broad view that you should be prejudiced about it. It's his views, it's fine. Don't worry. You should be prejudiced about the country. You should, between India and Pakistan, you can't pretend to be neutral. I can't be neutral. So I because will totally eating also. as we are in our own organization, of course, we stick to certain views of ours, and because the legend has always chosen his own, and that's why the Republic is there, and that's the whole idea of a Republic. Inki views rahenge, jo real views rahengi, and of course, each company will have their own views, and that's the reason why we will continue to support the government and be with whatever the government decisions are. Okay, let's get back into I'll start this one. straight into fear. Yeah. Okay, go. रेडियो सिटी 91.1 पर आज एक बहुत ही चार्ज्ड मॉर्निंग है. जैसे एक मोबाइल फोन जब मर रहा होता है उसको चार्जर दे देते हैं ना, ऐसे अर्नब गोस्वामी कमिंग इन टू द रेडियो सिटी Kasaragod Mumbai स्टूडियो हैज गिवन अ न्यू चार्ज टू Salil and me. नेशन वांट्स टू नो कॉपीराइटेड है क्या सर? So how did you think of this line? कहाँ से आया? ये line कहाँ से आई सर? So I was doing my program, and then I began to feel that these politicians are not taking what I'm saying seriously. Ji. And when I started, generally, they would think that, compared to the other editors who were much older and much more experienced, they used to feel that I was stepping out of the line. Ji. Zyada sawal puchta tha, zyada directly puchta tha. So, in order to give legitimacy to what I was saying, right? So, मैंने कहा कि this is not just Arnab wants to know. I remember this once with Praful Patel, I think. Ji. I said, Mr. Patel, and he kept dodging the question again and again and again. You know how politicians are. Ji. Finally, I told him, Mr. Praful Patel, the nation wants to know. And for a while, I think he was a bit stunned. Then I saw his reaction, Archana. And I said, good idea. Why don't I do this again and again and again, right? So these people So this, started are you coming on saying the कि program. by mistake आपका ये line actually आया? No, because at that time I was a very junior anchor. जी. And when a junior anchor asks a question, he can be brushed aside, Yes, right? yes. Arnab wants to know, अरे who's Arnab? कहाँ से आया? क्यों बताऊँ आपको, right? But I felt my question needed an answer, so I started saying, Mr. Patel, the nation wants to know. Mr. Rao, the nation wants to know. Mr. XYZ, the nation wants to know. Now, I say it. I have said it so many times that it became a line. And then one day I was in Palladium Ji. in mall. Let me tell you the story. I was watching a film and we're coming back, me and my wife and son. We walked down the escalator, okay? And then somebody came to me and said, sir, they were selling t-shirts. And on the t-shirt it was written, there was a picture of mine and there was written Nation Wants to Know. The person didn't recognize me. So he was selling me a t-shirt with my own line. And once I went to Parliament, and that's when I entered the very big minister's office. The minister said, oh, what does the nation want to know?
And then one day I went to the Supreme Court of India where I had a 100 crore case against me. I didn't know how to pay. As I entered the court, everyone said, oh, the nation wants to know something. So I realized that people are watching this, they're liking the line. As a fact of the matter, serious level, I'm asking questions on behalf of the nation. Yes. I do believe that I'm asking questions that the common man wants to ask. And that's why I say nation wants to know. Because what I ask is not for myself. I'm asking on behalf of my viewers. दो सवाल ऑलवेज उठते हैं. आपको कभी डर नहीं लगा है? आपने इतने बड़े बड़े लोगों की खिल्ली उड़ाई है, आपने उनको कई बार बोलने में नहीं दिया. ये भी आपसे सवाल मैं करना चाहूंगा. ये क्या एक आपका टेरराइजिंग स्टाइल ऑफ न्यूज रीडिंग था कि आपने बोला कि मैं जो सवाल आपसे पूछ रहा हूं उसका आप जवाब देंगे, अपना जो जवाब देना चाहते वो नहीं देंगे? नहीं, ऐसा नहीं है. एक्चुअली फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन डर. जी. किससे डरूं और क्यों डरूं? सबसे ज्यादा डर प्रोफेशनल की क्या होती है? तो मुझे लोग डराते थे जब मैंने स्कैम्स किए थे 2010-11 में. 6-7 स्कैम्स हुए थे, एक के बाद एक. कारगिल फॉर प्रॉफिट, आदर्श, देवासिस रोड, 2G, कॉमनवेल्थ गेम स्कैम वगैरह वगैरह वगैरह. तो डराने की कोशिश होती थी. एक बार एक नेता ने फोन किया था एट 8:45, तो उन्होंने कहा बहुत चिल्ला रहे थे. आदर्श का स्कैम हुआ था और मैं नाम ले रहा आपके स्टेशन पे, बट इट वाज द मोस्ट पावरफुल पॉलिटिशियन ऑफ द स्टेट, राइट? एंड ही वाज शाउटिंग at me. So finally I decided what do I do. So I said, Mr. So I'll tell you one thing. आपके जहां पे आप चिल्ला रहे, आपके घर के बाहर मेरी ओबी वैन खड़ी है, मेरे 2 रिपोर्टर्स हैं. बस तार अंदर कीजिए और आप मेरे शो पे चिल्लाइए. But he didn't come on my program and he resigned the next day. तो मुझे लगता है that when you look at somebody in the eye, तो आदमी, I have gone past all my fears. I have no fear. They tried to tell me, oh आपकी नौकरी चली जाएगी, आपको नौकरी से निकाल देंगे, आपको ये होगा वो होगा. तो बहुत कुछ बोलते थे और अच्छा, आपकी Z लेवल सिक्योरिटी हमने सुना था कि आपको दिया जा रहा है और हमें बताया भी गया था आज हमारे स्टूडियो आ रहे हैं, रास्ता क्लियर करना पड़ेगा. स्निफर डॉग्स आएंगे, बंदूकें होंगी, ये सब है क्या सर? आपने देखा कुछ? बिल्कुल नहीं, तो मैं भी चौंक गया था. आप तो ऐसे आगे अंदर जैसे हमारे फ्रेंड्स आते हैं, लाइक हाय साले लड़का. तो ये क्या अफवाह थी या कभी थी आपकी? बिल्कुल अफवाह थी, बिल्कुल अफवाह थी. और प्रॉब्लम मेरी ये है कि आजकल मैंने रियलाइज किया, मैं कुछ भी बोलूं तो ज्यादा कंट्रोवर्शियल हो जाता है. तो किसी ने ये रिपोर्ट किया that Rhodope has been offered Z level security. अगर मैं अभी कहूं कि सलील और अर्चना you are both been offered Z level security, तो आप you can do 2 things. One is that you can put out an official statement, no I have not been offered Z level security, or you can choose to ignore it. I chose to ignore it. Ignore करने के बाद देखा कि और भी बड़ी र्यूमर होगी. ऑफर किसी तरह से इनफॉर्मली थी जी, मगर मैंने इनफॉर्मली ऑफर को टर्न डाउन किया. But your wife never said, Arnab, take it please. My wife is absolutely more fearless than me. She wow. let me tell you this. And she also knows, and my family knows, that I have the love of the people. That's my biggest security. What security do you need when you have the love of the people with you? So you know, Arnab, हमारे देश में ये प्रॉब्लम है जब आप साइड्स लेते हो, स्पेशली जर्नलिज्म में आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि प्लीज डोंट टो द लाइन, आपको बीच में बैठना है, फेंस सिटिंग करनी है. आपने कैसे वो लाइन चेंज की, वो डेफिनेशन ही चेंज कर दिया आपने? अब फेंस सिटिंग करूं तो मुझे तो लगता है कि इस प्रोफेशन में होना ही नहीं चाहिए मुझे. और इस कंट्री में इतने ज्यादा फेंस सिटर्स हैं जर्नलिज्म में कि somebody has to step out of the line in that. फेंस सिटिंग करेंगे अर्चना तो कुछ बदलेगा नहीं. सिर्फ ऐसे ब्लैंड रिपोर्टिंग करेंगे ना तो कुछ नहीं बदलेगा. सवाल उसको पूछना पड़ेगा. उसके बाद कई सारे स्टोरीज होते हैं, हम देखते हैं कभी फंडामेंटलिस्ट, टेररिस्ट, इन फोर्सेस के बारे में जब हम रिपोर्ट करते हैं तो हम देखते हैं कि किस तरह से हमारे समाज में घुस के हमारे समाज को बिगाड़ने की कोशिश इज हैपनिंग फ्रॉम विद इन. You can't be a fence sitter then. But guidelines होती हैं कि आप as a journalist मत करो. मैं किसी की guidelines तो नहीं मानता. That we know, sir. And that's what I like. मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहता हूँ, मुझे सिर्फ अपने guidelines मानने हैं. And मेरे guidelines है my conscience, my beliefs, and my love for my nation. और कोई guidelines की जरूरत ही नहीं. That is what the nation had wanted to know. लेकिन मैं 2 सवाल करेंगे और फिर एक रैपिड फायर सर आपके साथ करेंगे और आपको भी 1 ही सेकंड मिलेगा आंसर देने के लिए, जैसे कई बार आपके गेस्ट को भी मिलता था. आपको कभी, ये आप थोड़ी देर में बताएंगे हमें, आपको कभी कोई न्योते आए हैं, इन्विटेशंस आए हैं आपके फेलो जर्नलिस्ट से टू जॉइन देम फॉर टी, कॉफी एंड ऑल दैट? डू यू हैव फ्रेंड्स इन द जर्नलिज्म इंडस्ट्री? वी विल टॉक अबाउट दिस. और थिंग्स लाइक सचिन एंड लारा और श्रीदेवी और माधुरी, ये भी क्या कभी इनकी जिंदगी में कोई चॉइसेस आई? ये थोड़ी देर में जानेंगे अर्नब गोस्वामी के साथ. आप भी हमें फोन कर सकते हैं 66969191 अगर आप कोई भी सवाल करना चाहते हैं फ्रॉम द ग्रेट अर्नब गोस्वामी. दैट लिंक इज बिग. I was wondering, I was just thinking. Not yet. Tell me. Tell me now.